Hello and welcome to Hornbill TV's Prime at 9. I'm Naomi Kikon. Union Home Minister Amit Shah on Saturday said that the Bharatiya Janata Party-led government will remove the Armed Forces Special Powers Act only after installing peace in Northeast India. The government will first bring peace in the Northeast and then only will remove AFSPA, which would not happen just for appeasement, Amit Shah said. He was addressing a public gathering at the inauguration of the newly built BJP office, the Atal Bihari Vajpayee Bhavan in Guwahati, which is spread over 95,000 square feet and is the party's biggest office in the Northeast region, expected to be full of all modern amenities. आज बहुत आनंद और हर्ष है 2014 से लेकर 2022 के अल्पकाल के अंदर आज पूरा नॉर्थ ईस्ट और हमारा आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है और मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए इस सौभाग्य का विषय है कि ये नॉर्थ ईस्ट का विकास और भाजपा का नॉर्थ ईस्ट में विकास दोनों समांतर चले। आज ये सब वरिष्ठ कार्यकर्ता यहां बैठे हैं। मैं भी यहां विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था। कल ही हेमंत जी को कहा, बहुत मार मारा था हमें हितेश्वर साइकिया ने और नारे लगाते थे असम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है, बहुत पीटा था। उस वक्त कल्पना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपने बूते पर असम के अंदर दो बार सरकार बनाकर यहां विकास का रास्ता प्रशस्त करेगा। और आप देखिए साहब, मैं भूमि पूजन करने आया था, सर्वदा के कान में कहा था, सर्वदा भूमि पूजन तो करा रहे हो, ये पूरा होगा क्या? क्योंकि हेमंत जी ने बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लिया था, 6 मंजिले का मकान, वो भी असम के अंदर, नॉर्थ ईस्ट का अलग कार्यालय। फिर भी मैंने तो भाई ईश्वर प्रार्थना कर कर भूमि पूजन किया था। आज मुझे बहुत हर्ष है कि आज वो 6 मंजिले का इमारत यहां खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कार्यालय कोई भवन नहीं होता है, कार्यालय भावनाओं का एक पुलिंदा होता है, सिर्फ भवन नहीं होता है। यहां कार्य का आलय होता है, यहां कार्य का रेखांकन होता है और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास की योजनाएं बनती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय और कोई पार्टी के लिए ईंट चूना पत्थर से बना हुआ मकान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये मंदिर से कम नहीं होता है। मित्रों, आज ये भव्य कार्यकर्ताओं के मंदिर को यहां देखकर मुझे मन में बहुत हर्ष हो रहा है। Later, Shah addressed a regional meeting on drug trafficking and national security at Assam Administrative Staff College, Guwahati, where all the chief ministers, chief secretaries, director generals of police and anti-narcotics task force heads of the northeastern states attended. Shah also inaugurated the drug disposal campaign of NCB with NCB video on drug disposal. सैकड़ों करोड़ों में होता है, तो 40,000 करोड़ 40,000 केजी ड्रग को हमने यहाँ पर जलाने का ऑनलाइन कार्यक्रम किया है। आजादी के अमृत महोत्सव में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तत्वाधान में गृह मंत्रालय ने एक निर्णय लिया था कि 75,000 केजी ड्रग हम डिस्ट्रॉय करेंगे। तो मुझे बताते हुए आनंद है कि अभी कुछ समय बाकी है, परंतु 75,000 किलो की जगह 1.5 लाख किलो ड्रग को हम डिस्ट्रॉय कर पाए हैं। ये हमारी बहुत और ये 1.5 लाख किलो ड्रग जो उपलब्ध डिस्ट्रॉय किया है, इसका मतलब है कि हमने ये अभियान को बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है। जब हम देश में एंटर होता है, तब से जो ड्रग का आदती बन गया है वो विक्टिम तक पहुंचे, तब तक की पूरी चैनल पर हम स्ट्राइक डाउन करें। तो मेरा सभी मुख्यमंत्रियों को आग्रह है कि जब आप राज्य स्तरीय एनकोड समिति की मीटिंग करें, तब आपके यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसको कॉस्मेटिक इन्वेस्टिगेशन की तरह
उसको सैंपल इन्वेस्टिगेशन की तरह थॉरली इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट करिए, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, ये अप्रोच के साथ उसको। भारत सरकार का ये अप्रोच बहुत स्पष्ट है कि ड्रग का जो सेवन करता है वो विक्टिम है और ड्रग का जो व्यापार करते हैं, ड्रग की तस्करी करते हैं, वो गुनहगार है। और दोनों के प्रति हमारा अलग अप्रोच। जो इसका व्यापार करते हैं, जो इसकी तस्करी करते हैं, इसके प्रति निष्ठुर व्यवहार और कठोर कानूनी कार्यवाही का गृह विभाग समर्थक, और जो विक्टिम है, जो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, उनके प्रति समाज कल्याण विभाग, आरोग्य विभाग सबका उपयोग करते हुए वापिस उसको मेन स्ट्रीम में लाना, अपने जीवन में पुनः प्रस्तापित करने का हमने लक्ष्य रखा है। मित्रों, आज जो क्षेत्रीय सम्मेलन बुलाया है उसका हमारा अप्रोच है कि एक समान रणनीति के साथ नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य ड्रग के खिलाफ लड़े। एक समान रणनीति के साथ तभी लड़ सकते हैं जब पड़ोसी राज्यों के बीच एक्सचेंज की मीटिंग, और इसकी जिम्मेदारी डीजीपी आसाम और मेघालय के पड़ोसी जिलों को जब तक मीटिंग नहीं हो तब तक ये तंत्र अच्छा काम नहीं करेगा। Naga organizations have expressed support to what they called the September Joint Accord signed by the NSC and IM and the Working Committee of the Naga national political groups. A press release received here on October 8 informed that the Naga apex organizations and the church extend their support to the September Joint Accord under the initiative of the Forum for Naga Reconciliation. Herefore, the public in sincere trust await the fulfillment of the September Joint Accord by the signatories in letter and in spirit, the press release stated. The Naga public will render its wholehearted assistance to the reconciliation process for the NSCN, GPRN and NNPGs to find common ground and mutually agree on a relationship of cooperation based on the Naga historical and political rights in order to move forward, it added. The organizations in the meeting were the Forum for Naga Reconciliation, Nagaland Joint Christian Forum, Naga Christian Forum of Manipur, Don Bosco Society, Naga Mothers Association, Naga Hoho, Nagaland Tribes Council Tenimi People's Organization, United Naga Council, Central Nagaland Tribes Council, Global Naga Forum, Nagaland Gaonbura Federation, Naga Students Federation and the All Naga Students Association of Manipur. Demanding the government to roll back the cabinet decision taken on September 20 that lifted prohibition of sale of liquor in the state, Coalition Against Drugs and Alcohol in association with local women's organizations continued to stage mass sit-in protests in different areas of the state. Chaukat Taurang Apunba Nubi Loop, Chongapi Durel Awang, Kakup Meira Paipi and CADA Imphal East District Committee staged a protest demonstration at Gongpa Chongwabi Multipurpose Hall demanding revocation of the cabinet decision that legalizes sale and brewing of liquor in the state. The protesters also shouted various slogans denouncing the government's move. CTANL Secretary Siram Tamna strongly denounced the government's move to legalize liquor at a time when many youths of the state are severely affected by consumption of liquor. She questioned if the government's decision to legalize liquor would be
the reward for the hard effort of the mothers who spent many sleepless nights to prohibit liquor. Protests also carried out at Govinda Gram Mekha, Laikai Gaitel, Lairen Jampokul Makong and Tagiel Kongbal. Yaipa Lamjing Women Welfare Association Secretary Namoi Jam Ningol Leima urged the government to review the cabinet decision that came as a shocker to mothers of the state. The body of a young woman was recovered from the flat in Chandrapur area of Tripura's capital Agartala on Saturday morning. The police recovered the hanging body of a 27-year-old woman who has been identified as Preeta Debnath from a flat. It is learned that the young woman was a resident of Kolkata and she was a fashion designer by profession. She had been living in the Chandrapur flat for a few months. The parents reportedly lost contact with the girl during the past few days. The family members came to the flat and found the door of Preeta's house locked from inside. Later, the police was informed. When the police broke the door open and entered, they found the body of the young woman hanging by her neck. Later, the police took the body to GB hospital for postmortem. The police has started investigating the incident. সে দেখলো দরজা ভিতর থেকে বন্ধ তখন ওই সবাই সহযোগিতায় পুলিশকে সাহায্য তার মা বাবার সামনেই দরজাটা খোলা হইল খুলে সেটা দেখলো যে মেয়েটা নিম অবস্থায় পাওয়া গেল হ্যাঁ তার বাবা মা তো সঙ্গে আছে তার বাবা বললো তার মার নাম পিঠা দেবনাথ বাবার নাম শক্তিপদ দেবনাথ বাড়ি এলো তারা ব্যারাকপুর কলকাতা মেয়েটা তারা বললো যে ফ্যাশন ডিজাইনার মেয়েটা ফ্যাশন ডিজাইনারের কাজ করে 5 তারিখ তো লাস্ট কথা হইল মার সঙ্গে 5 তারিখেই সম্ভব 5 তারিখেই এরকম করছে IAF Air Chief Marshal Vivek Ram Chowdhury on the occasion of 98th Air Force Day celebrations hailed the government's decision of approving weapon system branch for officers and said that the creation of such a branch will save 3,400 crore on flying training. Addressing the event, Chaudhary said, "This is the first time since independence that a new operational branch is being created. This will essentially be for manning of 4 specialized streams of surface-to-surface missiles, surface-to-air missiles, remotely piloted aircraft, and weapon system operators in twin and multi-crew aircraft," he said. The creation of this branch would result in savings of over 3,400 crores due to reduced expenditure on flying training, he said. I think there are various ways of saying future conflicts can be short, swift, high intensity. They can be protracted, low intensity, probably what we see, or they could be protracted with varying intensities depending on the global situation at that time. So predictability of this, of what kind of conflicts that we are likely to face, will be based on the continuously changing geopolitical situation around us. We are preparing ourselves for the worst case scenario always, which is a protracted and intense conflict. So we always prepare ourselves for such kind of scenario. The man-eating tiger who killed 9 people in Bagaha in the West Champaran district of Bihar has been shot dead on Saturday. The order for killing the tiger came after a 34-year-old man from Dumari village under Singahi Panchayat in the Ranghia forest range of Valmiki Tiger Reserve was mauled to death by a tiger on Friday morning. He was the second victim in 24 hours and the 4th since September. Orders for killing a tiger are issued as per procedure when it's established that tiger is accustomed to living in human habitation. Tiger killed 4 people in the past 3 days, DFO told NI earlier today. Chief Election Commissioner Rajiv Kumar wrote a letter to the Law Ministry proposing to limit one person to contest only from one constituency at a time. At present, one eligible person can contest elections from 2 different seats or constituencies. The move comes in the backdrop of the poll panel recently delisting 284 defaulting and non-compliant registered unrecognized political parties, declaring more than 253 of them. 86 RUPPs were found to be non-existent
either after a physical verification carried out by their respective chief electoral officers or concerned states or UTs, or based on the report of undelivered letters or notices from the postal authority sent to the registered address of the concerned RUPP. In Muslim traditions, Eid-e-Milad-un-Nabi is celebrated as a birthday of the last prophet. It is a special religious festival celebrated among the Muslim community and is celebrated with great festivity on the 12th of Rabiul Awal, the third month of the year. Preparations are being made to celebrate this day with due dignity in the state of Tripura as well. Bangladeshi Muslims call this day Eid-e-Milad-un-Nabi. On the other hand, this day is known as Nabi Day to Muslims of West Bengal. In the early days of Islam, the observance of Muhammad's birth as a holiday was usually observed privately. Earlier celebrations included Sufi elements and influence, including mass religious meetings, feasts, and torchlight processions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Agamikal pavitro jashne juluse Eid Milad-un-Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam মুবারকবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি গোটা বিশ্ববাসীকে, দেশবাসীকে, বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরাবাসীকে। আমরা আগামীকাল পবিত্র জশ্নে ঈদ মিলাদুন-নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুলুস বের হব। সকাল 9 ঘটিকায় আগরতলা কেন্দ্রনগরস্থিত সৈয়দ ইউসুফ শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহির মাজার শরীফ থেকে এই জুলুসটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে পুনরায় গৌসিয়া জামে মসজিদের মধ্যে একত্রিত হবে। এখানে আমাদের পরিসমাপ্ত হবে, আমাদের আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা হবে, মিলাদ কিয়াম, দোয়া দুরুদ এবং তাবারুকের ইন্তজাম রয়েছে। আমি জানাচ্ছি আগরতলা গৌসিয়া সমিতির পক্ষ থেকে মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম কাদেরী এই নিউজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে প্রত্যেক দেশবাসীকে মোবারকবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনারা সকলে আমাদের আগামীকালকের এই জুলুসে যেন শামিল হতে পারেন এবং আমার প্যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের খুশি ও রাজামন্দি যেন আমরা প্রত্যেকে হাসিল করতে পারি। আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই সুযোগ করে দেন। আমিন ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম। Congress leader Rahul Gandhi held an interaction with the masses as the Bharat Jodo Yatra resumed from Maya Sandra, Tamaguru in Karnataka on Saturday and said that the party believes in fighting against those who spread hatred. He also highlighted the fact that the community of the person spreading hatred doesn't matter. His view is that it doesn't matter who the person spreading hatred is, it doesn't matter which community they come from. Spreading hatred and violence is an anti-national act and the Congress will fight against such people, said Rahul Gandhi. There are people in India who do not understand this country. They do not understand Basavanaji, they do not understand Narayana Guruji, they do not understand Ambedkar. That is the type of India that we want. Inta Bharatavanda Nilanta. If the Tamil people want to speak Tamil, they should be allowed to speak Tamil. Tamil Nadu General, Tamil Bhashena Matadbekandre, or Tamil Matadanta Swatantra, these are the ideas behind the Bharat Jodo Yatra. They do not understand the history, the traditions of the states of this country. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಇತಿಹಾಸ ಯಾವುದೊಂದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. They do not understand Basavanaji, they do not understand Narayana Guruji, they do not understand Ambedkar. We walked 13 kilometers this morning and we walked 2.5 kilometers just now. And throughout this walk, we call people from the crowd, we call farmers, we call our sisters, we call laborers, we call small and medium business owners and we talk to them. The whole day we listen to them. That's all for now. Keep watching Hornbill TV.